पवित्रा जैन, प्रणव गोगोई। यस सर, मैं हूँ। हाँ प्रणव, आप स्टूडेंट है राइट? जी, मैं एमबीए परस्यू कर रहा हूँ अभी। आप एमबीए कहाँ से परस्यू कर रहे हैं प्रणव? जी, GIMT, गिरजानंदा। अच्छा, आप एमबीए एग्री बिजनेस परस्यू कर रहे हैं कि नहीं, क्या? जनरल यू कैन से। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। कोई एग्रीकल्चर से है स्टूडेंट जो अभी एग्रीकल्चर से एजुकेशन परस्यू कर रहा है, बीएससी या एमएससी या एमबीए, एनीबॉडी? जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। एक बार थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्या चाहते हैं एग्री बिजनेस सेक्टर से, और किस तरीके की आप जॉब देखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए ताकि मैं वो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर पाऊंगा मैं। आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। प्लाबिता गोगोई, मुझे नाम लेना पड़ रहा है, अदरवाइज आप खुद स्टार्ट कर सकते हैं। दोलजीत बोरा। Yeah, hi, this is Doljit here. या दोलजीत। या एक्चुअली एग्री बिजनेस में क्या है, मैंने ट्राई किया था पोल्ट्री के बारे में। ओके। तो व्हेन यू गो फॉर एग्री बिजनेस, द फर्स्ट थिंग कम्स इज द फाइनेंस, ओके, फॉर एनी बिजनेस. सो आई ट्राई टू कॉन्टेक्ट नाबार्ड. ओके। That's the bank where you get the business related loans. And the thing condition is like that. I am from Golaghat, Assam. ओके। So I went to the Nabard bank in Golaghat. ओके। There I came to know that Nabard, Golaghat and Silsar, there are the two banks have only one employee. I ran for around 1 month, just for loans and all. Couldn't pursue anything. So I'm a student. So from my savings, I started. I was first planning for layer poultry. Then now I have ducks that I ओके। started with my own fundings. So funding is a great issue in this thing because the banks are not willing ऑलराइट, to आई give गॉट इट। you I got it. anything I below will that. guide you for the funding also, how we can take funding from the market. In fact, sir, डॉक्टर देखा साहब, अभी मैं एक सीएस के पालमपुर में मैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उसमें मुझे इनफैक्ट वहां से ही मुझे टास्क मिला है कि वहां पे 18 स्टार्टअप है। आरके भाई, रफ्तार प्रोग्राम शायद आपको पता होगा ऑलरेडी, जो रफ्तार मैनेज का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें मैं 18 स्टार्टअप्स को गाइड कर रहा हूँ उनकी फंडिंग के लिए, उनके इन्वेस्टर्स के लिए। Okay, okay. तो Please mention your lectures, then so that students will be benefited. They can take the यस, about the इनफैक्ट मैंने आपको भी शायद भेजा था व्हाट्सएप पे, आपको इन्फॉर्मेशन मिली yeah, होगी। you have given me. Yes. या Yes. तो अगर ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो स्टार्टअप वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई सपोर्ट चाहिए एग्री बिजनेस में, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। I will also help them. Okay, to give this. यस सर, Okay. थैंक यू। सो ओके, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या आपका प्लान है। तो एक काम करते हैं, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि ग्लोबली कौन कौन से एग्री बिजनेस करियर अपॉर्चुनिटी से कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको समझना बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर सिर्फ मिट्टी में जाके पौधे उगाना नहीं रह गया है, ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। एग्रीकल्चर सिर्फ अपने जो है फसल को काटना और मंडी में बेचना नहीं है, इट इज बियॉन्ड दैट। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और कोविड के बाद तो ये इतना बड़ा बिजनेस है कि एवरीबडी इज प्लानिंग टू एंटर इन दिस सेक्टर। इनफैक्ट हम जो कॉलेज वगैरह भी हमने प्लान किया है, वो भी हमारा इसी सोच से था कि एग्री बिजनेस जो है, कल को आपको फूड सिक्योरिटी आपका सबसे बड़ा एजेंडा होगा, फूड सेफ्टी आपका सबसे बड़ा एजेंडा होगा, तो उसके लिए आपको ट्रेन मैनेजर्स चाहिए, क्वालिफाइड मैनेजर्स चाहिए, राइट। तो लेट्स सी ग्लोबली कौन कौन से स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ स्टार्टअप्स के आपको नाम फटाफट बताऊंगा, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड अपॉर्चुनिटीज ही बताऊंगा। ये कंपनी है, कंपनी का नाम है अर्थ सेंस। तो व्हाट दे डू, इनके पास ये रोबोट। ये रोबोट को अगर आप फील्ड में छोड़ देंगे तो जस्ट ये रोबोट ट्रैवल से अपना वॉक करेगा, अपने ऑटोमेटिक बैटरी से सिस्टम है, और उस खेत का सारा प्लांट हेल्थ, फिजियोलॉजी, वहां पे क्या उसका टेम्परेचर है, कौन कौन सी उसमें डिजीज वगैरह हैं, वो सारा का सारा आपको डेटा कलेक्ट करके आपके लैपटॉप सिस्टम पे, सॉफ्टवेयर सिस्टम पे दे देगा।
मतलब अगर आप ऐसे फील्ड में जहां आप जा नहीं सकते हैं, जहां आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं है, आपके लेबर क्वालिफाइड नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है फसल का ध्यान रखना है, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसे मैनेज करनी है, तो ये रोबो पूरा हेल्प करता है। अब इसमें किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं? जो लोग इस टेक्नोलॉजी साइड में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या कंप्यूटर साइंस से हैं, या इस रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस टाइप के स्टार्टअप्स को, आप ये चाहें तो ये नाम नोट कर सकते हैं, जो भी मैं स्टार्टअप का आपको नाम बता रहा हूँ आप ये नोट करते चाहिए, तो आपको आइडिया रहेगा। आप एक बार इनकी वेबसाइट गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंडिया में इस तरीके के और भी स्टार्टअप्स हैं। और आप, ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी साइड में हैं तो आपको एग्रीकल्चर में जाने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। आप कंप्यूटर साइड पे भी एग्रीकल्चर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ले सकते हैं, जो रोबोटिक्स में जो डेवलपमेंट हुआ होगा, जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर के बेसिकली रोबो डिजाइनर्स हैं वो इस फील्ड में आ सकते हैं, या जो प्योर एग्रीकल्चर से हैं उनको ये पता रहना चाहिए, उनको डेटा इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए कि प्लांट की फिजियोलॉजी क्या होती है, उसका स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, हाउ यू मैनेज द प्लांट हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें, एक मैंने आपको ये स्टार्टअप बताया। अगला स्टार्टअप है बायोमेकर्स। हमने ये बहुत एग्रीकल्चर में हम बहुत पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सॉइल हेल्थ, फॉर द सॉइल कंडीशन, फॉर डिग्रेडेशन ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड एवरीथिंग। तो ये बायोमेकर्स क्या करता है, आप एक चम्मच मिट्टी को इस ट्यूब में रखते हैं, सो दे हैव अ मशीन, ये डीएनए सीक्वेंसिंग पे काम करता है। ये बता देता है कि इस फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। यानी कि अगर आप इसमें पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो वो कितने लेवल पे डिग्रेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आई थिंक यू आर अवेयर कि इनके अब्जॉर्प्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। जितने भी ये फर्टिलाइजर्स हैं, ये पेस्टिसाइड है, उनका अब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट में, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो समहाउ दिस मशीन डिटेक्ट्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सिचुएशन, इंपैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। तो यहाँ पे भी आप किस तरीके के करियर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, या जो एमएससी आप सॉइल में कर रहे हैं, या आप सॉइल टेस्टिंग में कहीं ना कहीं कुछ आपका इंटरेस्ट है, तो दोज पीपल कैन लुक फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस काइंड ऑफ स्टार्टअप। अब मैं आपको ब्रॉडर सेंस भी दूंगा कि इंडिया में कौन कौन सा, ये सारा चीजें एमर्जिंग है, इसका बहुत बड़ा मार्केट आएगा, इंडिया में बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। और ये आप बिल्कुल, अगर इस तरीके किसी भी इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ से आ सकती है। अब एक ये सॉफ्टवेयर है, एक ये स्टार्टअप है, स्टार्टअप नहीं कहूंगा, इट्स नाउ एस्टेब्लिश्ड कंपनी, काकाशी। ये आप जो व्हाइट कलर की डिवाइस देख रहे हो ना, इस डिवाइस का नाम है काकाशी। इस डिवाइस को क्या करते हो, आप फील्ड में रख देते हो। जैसे आपका प्लांट है, आपका हिली एरियाज में, आसाम में जैसे प्लेन है या हिली एरियाज भी हैं, नागालैंड है, अपना मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, तो वहाँ पे हिली एरियाज है। तो अब ये डिवाइस को आप फील्ड में रख देते हो, इसमें कैमरा भी है, इसमें सेंसर्स भी हैं। तो ये क्या करता है, ये लोकल का वो वेदर डेटा कलेक्ट करता है कि कितनी मॉइस्चर है, कितना सन टेम्परेचर है, कितना वहाँ पे ह्यूमिडिटी है, और वहाँ पे फूड ग्रोथ कैसे हो रही है। ये जो प्लांट्स की फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर करके सारा डेटा वेस कलेक्ट करके आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में सब कुछ बता देता है कि भाई इस तरीके से आपका जो है पूरा प्लांट, जो आपका फील्ड है, इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी बहुत यूजफुल डिवाइस है। अब मैं आपको जितने भी स्टार्टअप बता रहा हूँ, सारे के सारे आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो तो एग्जीक्यूशन साइड में वर्क कर सकते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन की तरफ। और जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टूडेंट है, जो टेक्नोलॉजी साइड से हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, आईटी के हैं, सिस्टम्स के हैं, डिजाइनिंग के हैं, वो बैकएंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है ये टेक्नोलॉजी। आपने शायद ड्रोन डिलीवरी तो आपने सुना होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे आर प्लानिंग ड्रोन डिलीवरी इन आवर कंट्री। तो बेसिकली आप ड्रोन से, आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वो ड्रोन यूज करने का प्लान कर रहे हैं, एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ ड्रोन। तो ग्रेट टेक्नोलॉजीज क्या करते हैं, ड्रोन से फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। इंडिया में अभी उसका मार्केट उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास फार्म उतने बड़े नहीं है। ये जल्दी जहाँ पे जो बड़े फार्म्स होते हैं वहां पे करता है, बट जैसे अभी ये मार्केट बहुत छोटा है,
But anyway, those who are interested in drones, those who are interested in aviation, those who are interested in फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उनको ही थोड़ा पता रहना चाहिए कि इस तरीके के स्टार्टअप्स भी, कंपनीज भी मार्केट में हैं जहां से आप अपना एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। हमने 3-4 कवर किए, फिर उसके बाद आता है एग ड्राफ्ट। अच्छा, मैं मीनवाइल क्योंकि मेरी स्क्रीन पे किसी का वीडियो विजिबल नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ना डिस्कशन भी करना चाहूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं? यस यस। जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनको ये चीजें समझ, एम आई क्लियर इन माई डिस्कशन? मैं कुछ कहीं को किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है अभी तक, कुछ पूछना चाहता है? Yes, some student has Pranab Gogoi has written yes in starting. Yeah, Pranav, would you like to ask anything? Or you are understanding everything? That's why you are writing yes. Yes, sir. I said because I was understanding the things. Yeah. All right. But All sir, right. I'm asking, yeah. Yes, sir. Carry on. Okay. Okay. So meanwhile, I'm asking because screen पे visible नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये देखना चाह रहा था। ठीक है? Anyway. तो क्रिएट टेक्नोलॉजीज के बाद हम आते हैं एग ड्राफ्ट। एग ड्राफ्ट अपने आप में आपको पता होगा, सबसे ज्यादा जो आजकल फार्मिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो टाइमली लेबर मैनेजमेंट का। आप खेती करना चाहते हैं, आप फिशरीज करना चाहते हैं, आप ऑर्चर्ड लगाना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं, बट आपको टाइमली स्किल्ड लेबर नहीं मिलती है ना। तो अभी जैसे मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, आपको जैसे आपने Naukri.com का नाम सबने सुना होगा, राइट? Naukri.com क्या होता है, आप अपना रिज्यूम अपलोड करके रख देते हो, सामने वाला रिक्रूटर होता है, उसको जिस क्वालिटी का रिज्यूम चाहिए रहता है वहां से डाउनलोड करके वो आपको अप्रोच कर लेते हैं, है ना? ऐसे होता है। ये एग ड्राफ्ट में क्या हो रहा है, जो ट्रेन्ड सर्टिफाइड लेबर है, जो स्किल्ड मैन पावर है, जो एग्रीकल्चर की लेबर है, सपोज कुछ ऐसी लेबर है जिसको एप्पल ऑर्चर्ड्स में काम करना आता है, कुछ ऐसी लेबर है जो टी गार्डन्स में काम करती है, कुछ ऐसी लेबर है जो एग्रीकल्चर राइस फील्ड में काम करती है। तो ऐसी लेबर और लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं एग ड्राफ्ट में कि भाई हम अवेलेबल हैं और हमारा चार्जेस इतने रहेंगे। सामने वाला जो फार्मर है या जो फार्म लैंडलॉर्ड है, उसको जो लेबर चाहिए वो भी अपने आप को रजिस्टर करता है और वहां से उसकी डिटेल निकाल लेता है कि हाँ भाई ये वाली लेबर इस टास्क के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इससे हम बात करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है और फार्मर भी अवेलेबल है, दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में ऑलरेडी इस तरह के स्टार्टअप चल रहे हैं। बल्कि जो हमारा अर्बन कंपनी है, जैसे पहले अर्बन क्लैप कहते थे, वो भी क्या करता है, उनके पास सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं, सर्टिफाइड ब्यूटिशियंस हैं, सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियंस हैं, राइट? हमको जरूरत पड़ती है, हम अर्बन कंपनी को ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो हमारे घर में भेज देता है। सेम थिंग दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग, एग ड्राफ्ट। अब इसमें आप किस तरीके का आपको करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड। आप इसमें बैकएंड में आराम से सिस्टम्स पे काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड में आप फील्ड पे काम कर सकते हैं, फार्मर्स का डेटाबेस कलेक्ट करके अपने सिस्टम पे अपलोड करना है वो कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। ये सारे स्टार्टअप्स आपको पता रहने चाहिए कि इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से स्टार्टअप वर्क कर रहे हैं, ताकि आप अपने एम्प्लॉयमेंट को उससे रिलेट कर पाओ कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, है ना? देन मोटर लीफ ये जो डिवाइस है, आई एम श्योर सर कि आसाम में यहाँ पे ग्रीन हाउस भी काफी पॉपुलर है, ग्रीन हाउस कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस काफी कुछ होता होगा, बहुत सारी क्रॉप्स आप ग्रीन हाउस में लेते होंगे। एनीबडी? ग्रीन हाउस है नॉर्थ ईस्ट में? Not hello, Pandey sir. Actually, greenhouse is there, but thing is there in Assam, this application is very less. So those who are students are joining, they are unable to tell this. Thank you. अच्छा, ओके। तो ग्रीन हाउस होगा आपके यहाँ, पॉली हाउसेस भी होंगे, शायद आपने देखा भी होगा बट आपको पता नहीं होगा। तो ये जो डिवाइस है ना, इसको आप अगर ग्रीन हाउस में लगा देते हो तो ये ग्रीन हाउस के अंदर का पूरा टेम्परेचर, क्लाइमेट मॉनिटर करके ये भी बता देती है कि आपका प्रोडक्शन कितना होगा किसी क्रॉप का। एक फोरकास्ट कर देती है कि अगर आपका इस तरीके का प्लांट का ग्रोथ है, इस तरीके के आपका टेम्परेचर है, इस तरीके की सॉइल में मॉइस्चर है, इतनी ह्यूमिडिटी है,
तो एक ग्रीन हाउस जनरली आपको, आप जब एग्रीकल्चर में इसमें जाएंगे या आपने कभी ग्रीन हाउसेस या पॉली हाउसेस देखे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको पता रहना चाहिए ग्रीन हाउसेस क्या होता है ना। आपने ग्रीन हाउस पॉली हाउसेस देखे होंगे, तो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो डिवाइस है ये क्या करती है कि पूरा कैलकुलेशन कर लेती है उसके अंदर में कि कितना प्रोडक्शन होगा उस चीज का, है ना। मैं आपको बस एक सेकंड ग्रीन हाउस दिखा दूं बाकी बच्चों को जिनको पता नहीं है, ताकि राइट, ये विजिबल है, आपको दिख रहा है ये? यस। ओके, तो ये जो नेट हाउसेस आप ये देख रहे हैं, ग्लास हाउसेस, नेट हाउसेस, ये पूरा का पूरा छोटे छोटे घर होते हैं जिसके अंदर प्लांट का आप कल्टीवेशन करते हो। ये देखिए काफी सारे फोटो हैं, छोटे छोटे छोटे, तो इनके अंदर ये कमर्शियल प्रोडक्शन होता है, इनके अंदर ये कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। और इसके अंदर का पूरा टेम्परेचर उसको मॉनिटर करना, उसका ये देखिए, ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। दिस इज अ पॉली हाउस, इस तरीके का होता है छोटा छोटा। तो ज्यादातर आपके जो प्लांट्स वेजिटेबल्स हैं या आपके फ्लावर्स हैं, यू नो, वो इस तरीके के ग्रीन हाउसेस में लोग ग्रो करता है। ओके, नाउ आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन ऑल्सो। ये बच्चों को बताना जरूरी था ताकि आपको आइडिया रहे। ओके, अब कार्बन न्यूट्रल एग साइंस क्या करता है? अच्छा, ग्रीन हाउस से रिलेटेड बिजनेस कौन कौन से हैं? बहुत सारे एसोसिएटेड बिजनेस है जहां पे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एक तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है कि ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्ट ही कैसे होता है, ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अंदर ग्रीन हाउस के अंदर फार्मिंग कैसे होती है, आप सब्जियां कैसे उगाते हो, आप फ्लावर्स कैसे उगाते हो। उसके बाद प्रोसेस आता है इन सब्जियों को आप मार्केट तक कैसे ले जाओगे, तो उसका जो सप्लाई चेन है वो अपने आप में आजकल बहुत बड़ा मार्केट है। आपको मैं सप्लाई चेन के स्टार्टअप्स का भी एग्जांपल दूंगा। तो मैनी स्टार्टअप्स आर वर्किंग, उसमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। तो सप्लाई चेन के बारे में भी आप आसानी से जो है इसमें पता कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी एम्प्लॉय, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपके घर पर डिलीवर हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे किसी सब्जी को, आपके घर पे वो सब्जी आ जाएगी तुरंत, पॉली हाउस या ग्रीन हाउस से या खेत से टूट के, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पैक करके रखते हैं, जैसे बिग बास्केट कर रहा था, ग्रोफर्स कर रहा था, उन्होंने भी सब्जियां वगैरह बेचना शुरू कर दी थी, वो सक्सेसफुल नहीं है। बट अब कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो फार्म टू फॉक काम करता है, मतलब फार्म से लेके आपकी प्लेट तक वो सब्जी एकदम फ्रेश आएगी, 12 घंटे के अंदर फार्म से टूट के आपके घर सब्जी डिलीवर हो जाएगी। तो अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जहां आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? डिलीवरी साइड, कोल्ड स्टोरेज साइड, पैकेजिंग साइड, आपको फ्रंट लास्ट एंड डिलीवरी करनी है, आपको पॉली हाउस या ग्रीन हाउस का मैनेजमेंट करना है, तो वहां पे एज अ एग्री एक्सपर्ट आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ये सब ग्रो हो रही हैं, और ये सारा आपको पता रहना चाहिए। अब ये कार्बन न्यूट्रल एग साइंस क्या करता है? इसके दो प्रोडक्ट हैं, बाउंटी जेल जी और बाउंटी जेल पी, कार्बन न्यूट्रल एग साइंस। इसके दो प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली आपने पहाड़ी, खासतौर से हिली रीजन के लिए बहुत इफेक्टिव अच्छा है। ये क्या करता है, हिली एरियाज में जहां पे स्टीप कल्टीवेशन, स्टेप कल्टीवेशन है या बहुत स्टीप ढाल है जहां पे पानी रुकता नहीं है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप इनके ग्रेन्यूल्स को ना मिट्टी में मिला दो तो इनमें वाटर अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है 150 टाइम्स, अपने साइज से 150 टाइम्स वाटर अब्सॉर्ब करके रखते हैं। तो अगर एक बार आपने इसको मिट्टी में मिला दिया तो जो भी उसकी मिट्टी की नमी रहेगी ना, उस नमी को ये पकड़ के रखता है, तो आपका प्लांट डाई नहीं होता और आपको ज्यादा इरिगेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल मॉइस्चराइजेशन करने की जरूरत है। तो आपका मॉइस्चराइजेशन करना है, इरिगेशन नहीं करना है। तो इन दैट केस ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं। ये उन जगह ज्यादा होते हैं जहां पे आपकी ड्रिप इरिगेशन से फार्मिंग हो रही है, वाटर लेवल ठीक नहीं है, वाटर की सप्लाई ठीक नहीं है, या हिली एरियाज है जहां पे पानी रुकता नहीं, तो वहां पे इस तरीके का स्टार्टअप ये काम कर रहा है। एंड आपने ट्रैप व्यू, आपने ये ट्रैप्स के बारे में पढ़ा भी होगा या देखा होगा। ट्रैप व्यू ये जो स्टार्टअप है
इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे हाउस शेप के ट्रैप्स होते हैं, आप उसको किसी भी पेड़ पे लटका दीजिए, राइट। उसमें उस ट्रैप में ये कमर्शियल ट्रैप्स, रेडी टू यूज ट्रैप्स आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका पेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है ये। बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि फसल में कौन सा कीड़ा लगने वाला है या लग गया है, इसका आपको फोरकास्ट ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे दे देगा। अगर आपका फार्म है 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ का, तो जो साइज के हिसाब से आते हैं, ट्रैप आपने एक लगा दिया, अगर आपको पहले ये पता चल जाए कि भाई अगले 5 से 10 दिन में ये कीड़ा लगने वाला है या इसकी जस्ट शुरुआत हो गई है, तो इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट कर देंगे, इमीडिएटली आप केमिकल डालेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। मगर यही चीज अगर आपको 1 महीने बाद पता चलेगी तो आप इवेंचुअली अच्छे खासे लॉस में रहेंगे, आप उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, ये भी काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं इंडिया में खास तौर से, क्योंकि किसान उतना ज्यादा अभी एजुकेटेड नहीं है, उसको पहचान नहीं है कि भाई कौन सी बीमारी लग जाती है, इस बीमारी का कारण क्या है। तो ये सब ट्रैप्स होते हैं, सारी चीजें उनको हेल्प करते हैं, उनके मोबाइल एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन आ जाती है, अलार्म आ जाता है कि भाई ये बीमारी आपके खेत में लगने के आसार हैं या लग चुकी है, इसका समाधान करें। ये है। तो इस तरीके से भी आप देखिए वर्ल्ड कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी बदल रहा है, जैसी जैसी जिसकी जरूरत है उस तरीके के स्टार्टअप आ रहे हैं, है ना, उस तरीके की कंपनीज आ रही हैं। फिर आता है एग्री वेब। ये जनरली फार्म मैनेजमेंट की एप्लीकेशन है एग्री वेब। इसमें क्या होता है, आप ऐसे लगाइए जैसे कोई डेयरी फार्म है ना, डेयरी एक जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं उसमें अच्छे खासे काउज होते हैं, मल्चिंग एनिमल्स होते हैं, जो 20 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं, है ना। अब आप ये कैसे चेक करोगे कि मेरे डेयरी फार्म में 100 एनिमल्स हैं, वो कहाँ हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो बाउंड्री से बाहर चले गए हैं, भटक गए हैं। तो ये स्टार्टअप क्या करता है एग्री वेब, हर एनिमल पे ना हम उसके हाथ में एक बैंड लगा देते हैं या उसके गले में पहना देते हैं बैंड, जो कि जीपीएस इनेबल बैंड होता है, और वो सारे एनिमल्स आपके मोबाइल पे ट्रैक होते रहेंगे कि ये देखिए जितने भी आपके फार्म के एनिमल हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, वो ऐसे सर्कुलर रोटेट करता रहेगा और बताता रहेगा कि इतने सारे एनिमल हैं और ये उनकी लोकेशन। तो ऐसा कोई एनिमल जो लोकेशन से बाहर चला गया, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, आप तुरंत उसको रेस्क्यू कर लोगे। ये बैंड जो लगता है एनिमल के हाथ या पैर में, ये भी बताता है कि एनिमल की हेल्थ कंडीशन कैसी है, उसकी हार्ट रेट कैसी है, उसका टेम्परेचर कैसा है बॉडी का, ये 2 चीज और ले लेता है। तो अगर आपका एनिमल सिक है या बीमार है या होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यार इस एनिमल पे थोड़ा अटेंशन की जरूरत है। आप वो मैनुअली हर बार डेली बेसिस पे, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप वेटरनरी डॉक्टर को डेली बुलाएं या चेक करें, या आपको कई बार एनिमल को देख के समझ नहीं आता है कि इसकी कंडीशंस क्या है ना। हार्ट रेट अगर कम ज्यादा है या टेम्परेचर बॉडी का कम ज्यादा है, तो उसके बाद उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, है ना, इसको थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है, मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो ये स्टार्टअप्स भी मार्केट में देखिए, डेयरी सेक्टर में भी है ये काम, और कोई आपको डेयरी में उतरना भी नहीं है, ये तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आपको काम करना है। तो ये भी एक स्टार्टअप काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े फार्म्स हैं, यूएस, यूके, कनाडा, हमारे इंडिया में भी जो हरियाणा, एमपी, पंजाब में बड़े बड़े फार्म्स हैं, वहाँ पे इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। एक है बायोफिल्ट्रो। ओके, बायोफिल्ट्रो क्या करता है, आपका जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जो केमिकल से जो आपका वेस्ट वाटर निकलता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ये काम आता है। जहां पे इसका आउटलेट है वाटर का, उसके नीचे आप इस लेयर को रख देते हो। बेसिकली इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ा है हमारे वर्मी कल्चर को, जो वर्मी कंपोस्ट है, हमारे जो केचुआ होता है, हमारे जो वर्मी ये सारी चीजें होती हैं, ये इनमें क्वालिटी होती है इस चीज को डिग्रेड करने की, है ना। जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं। तो ये बायोफिल्टर क्या करता है, उस लेयर को आप रख दीजिए, उस लेयर को आप रख दीजिए, जैसे उसमें वो पानी गिरेगा, गंदा पानी गिरेगा, उसका ये लेयर ट्रीटमेंट करेगी। 3 लेयर्स होती हैं उसमें, वुड है, देन क्रश्ड रॉक है, देन ड्रेन बेसिन है। ये 3 लेयर्स को कन्वर्ट करके उसको यूजेबल वाटर में कन्वर्ट करती है, ठीक है।
तो ये एक स्टार्टअप वर्क कर रहा है। ऐसे इसी तरीके के बहुत सारे स्टार्टअप भी हैं जो बायोफिल्टर की तरह प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको एक का नाम बताया, बट आई थिंक यू शुड हैव सम नॉलेज कि ये भी एग्री बिजनेस को आप हल्के में मत लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर इज नॉट अबाउट जस्ट क्रॉपिंग एंड कटिंग एंड सोइंग एंड सीडिंग नहीं है, ये उससे कहीं बढ़ के है एग्री बिजनेस। इसलिए मैं एग्रीकल्चर की आज का जो टॉपिक है, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज इन एग्री बिजनेस, राइट? एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ एग्री बिजनेस, यू कैन से इट्स वन बिजनेस, बट इन एग्री बिजनेस वी आर टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए आप कहाँ छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग वेरी वेल। और जो सेक्टर में जल्दी एंटर कर जाता है ना, वो उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अर्ली मूवर एडवांटेज है आपके पास। तो अच्छा, ग्रेडिंग की ये मशीन है। आप हर जगह हमारे जो किसान हैं, आपको पता है, जब मंडी में अनाज लेके जाता है बेचने के लिए या प्राइवेट वेंडर्स के पास जाता है, तो आपको अपने अनाज को ना ग्रेड कराना पड़ता है कि उसका कितना मोटा दाना है, उसमें कितना मॉइस्चर है, उसका साइज क्या है, उसके हिसाब से मार्केट में उसका प्राइस मिलता है, राइट? तो ये मशीन क्या करती है, आप अनाज के कुछ दानों को इस मशीन के, आपको ये दिख रहा है, ये प्लेट में रखिए, ये जो प्लेट है यहाँ पे रखिए, आपकी स्क्रीन पे ये पूरा पिक्चर आ जाएगा और उसका पूरा एनालिसिस करके ये डैशबोर्ड बना देगी कि आपके इस क्रॉप में इतने ग्रेड का इतना परसेंटेज इस साइज का ग्रेन है, इतना परसेंटेज इस साइज का ग्रेन है, तो इसकी ग्रेडिंग इस सेगमेंट में आएगी। प्लस अगर दानों में कोई बीमारी लगी है तो वो भी ये ट्रैक कर लेते हैं। अगर जो आउटर स्किन से अपीयर हो रही है बीमारी, तो वो भी ये ट्रैक कर लेते हैं कि क्या है, और आपको पूरा इसका रिकॉर्ड मिल जाता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर जो किसान मंडियों में अनाज बेचने जाते हैं उसके पहले अगर वो ग्रेडिंग पहले ही कर लें, तो उनको पता चल जाएगा कि मेरे जो अनाज का रेट है ये मुझे मिलेगा। तो अंदर वहां जाके जो कमीशन एजेंट है मंडीज का, एपीएमसीज का, वो उसको चीट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कहेगा कि यार आपका सी ग्रेड है, आपको पता है कि मेरा तो बी ग्रेड है, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, आप सी ग्रेड कैसे बता रहे हो? भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी मुझे, तो आपको पहले से ही चेक कर लोगे ऐसी मशीन यूज करके। तो इस तरीके के स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं। अब इसमें जो हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं वो इस मशीन को डेवलप करने में काम कर सकते हैं, जो उसमें सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, इसका मेंटेनेंस, सारी चीजें इसमें, सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड भी है। ये वैंस वैसे ही है जैसे एग्रीवेब था, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया के जो फेमस स्टार्टअप्स हैं जो एग्री सप्लाई चेन में काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एग्री सप्लाई चेन समझते हो? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर अबाउट एग्री सप्लाई चेन? किसी ने सुना हो सप्लाई चेन क्या है? बार बार आप लोग सुनते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, एग्री सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, एग्री वैल्यू चेन। किसी को आइडिया है? आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, अकेले बोलते बोलते थक गया मैं। Participants, please, if you have. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ अपना फोटो देख के। Sir, I think retail. सर आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लाइक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके रिलेटेड होगा। आई हैव नो आइडिया, बट अच्छा, ओके, इट्स फाइन, नाइस ट्राई। और कोई एग्री सप्लाई चेन? From the farm to the retail stores. या फार्म टू रिटेल स्टोर्स में जो भी स्टेप्स बीच में आते हैं, है ना, इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में भी काफी अच्छे से। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने फार्मिंग करी, सप्लाई मीन्स आपने इनपुट की सप्लाई ली है ना, इनपुट आपके पास आ गए, आपने फार्मिंग की, आपने क्रॉप ग्रो किया, उसमें फर्टिलाइजर डाले, उसमें पेस्टिसाइड डाले, केमिकल्स डाले, उसका मेंटेनेंस किया, उसमें इरिगेशन दिया, ठीक है। उसके बाद जब आपकी फार्मिंग कंप्लीट हो गई तो आपने उसको हार्वेस्ट करके उसको पैकेजिंग करी उसकी जूट बैग्स में या पॉली बैग्स में, और फिर उसको प्रोसेसिंग यूनिट में भेज दिया, है ना। प्रोसेसिंग जब उसकी हुई, जैसे आपने गेहूं की खेती करी, आपने राइस की आपने फार्मिंग की, राइस को आपने कट कर दिया, आपने प्रोसेसिंग करने के लिए राइस मिल्स में भेज दिया। राइस मिल्स में प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर दिस प्रोसेसिंग, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस फॉर्म्स। एक तो आपका रॉ राइस भी लोग राइस डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो आपकी पैकेजिंग हो जाएगी,
यहाँ के राइस की पैकेजिंग हो गई, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड थिंग, जो राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइस के पापड़ हो गए, राइस के नगेट्स हो गए, बहुत सारे राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरियल्स में यूज होता है, सेरेलैक्स में यूज होता है, हेल्थ ड्रिंक्स में यूज होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ राइस, है ना। तो वहां पे ये प्रोसेस, सारा काम ये प्रोसेसिंग में होता है। तो ये सारा काम, एक तो सेकंड स्टेप इज प्रोसेसिंग। थर्ड स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन। आप कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपका प्रोडक्ट बन गया, राइस के बैग पैक हो गए, आपके पापड़ रेडी हैं, आपका और भी प्रोडक्ट्स इसके रेडी हैं, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है मार्केट। तो उसके लिए अलग अलग पूरी चेन होती है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, ट्रांसपोर्टर से बात करके रखनी पड़ती है कि भाई मैं अपने प्रोडक्ट को, जैसे अभी आप आसाम में बैठे हैं, आपको बंगाल भेजना है, आपको दूसरे स्टेट्स में भेजना है, तो आपको पूरे लॉस पता होने चाहिए कि बॉर्डर में किस किस तरीके से पास होगा। तो वो पूरा काम डिस्ट्रीब्यूशन वाले देखते हैं। वो एक अलग पूरा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। डिस्ट्रीब्यूशन की पैकेज, आप उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो राइस को, उसको पैकेजिंग करोगे उस चीज की, पॉली बैग में पैक करोगे, जूट बैग में पैक करोगे, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आपकी। तो देन वंस यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब ये मॉल्स में, शॉप्स में, रेस्टोरेंट्स में चला जाता है, उसका रिटेल में फिर कंज्यूमर उसको बाय करता है और अपने घर लेके आके उसको फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। ठीक है। तो अब मैं आपको ना कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बात बताता हूँ जो इंडिया में ऑलरेडी अच्छी कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, और उसमें ऑलरेडी अभी अच्छी इनको फंडिंग मिली है। आपको ये पता रहे कि एग्री बिजनेस नाउ इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर हु इज गेटिंग फंडिंग। Somebody has texted, I wanted to understand. Raw material to finished product, आसामीज में 3 वर्ड्स हैं, क्या है ये? उत्पादन, उपभोग करो, हाँ राइट, उत्पादन, ठीक है, मैं समझ गया, और उसका वितरण, राइट, ये सही है। ये आप आई थिंक सप्लाई चेन के बारे में बता रहे थे, रुपंजय और रिजवाना सुल्ताना, राइट, ओके गुड। सो अभी मैं आपको एग्री बाजार के बारे में बता रहा था। एग्री बाजार मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है। ये क्या करता है, आप अब देखिए किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है एग्री बाजार, आप, और आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी आप ये भी देखिए। अभी हमने एग फार्म की बात करी थी, हमने naukri.com, आपको पता है, आपको अर्बन क्लैब कंपनी के बारे में पता है। एग्री बाजार क्या करता है, जैसे मैं किसान हूं, अब मैंने किसानी कर ली, मैंने हार्वेस्ट अपना रेडी कर लिया, अब मुझे उसको हार्वेस्ट को सेल करना है। किसानों के सामने ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन फ्रंट ऑफ द फार्मर्स, दैट वेयर टू सेल, हाउ टू सेल, whom टू सेल। समटाइम्स कई बार मंडियों में सही रेट नहीं मिलता है, तो किसान को सेलर नहीं मिलते। अगर मानसून सही नहीं है या उसका लॉस हो गया है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो इस टाइम सेलर्स नहीं मिलते। तो किसान क्या करते हैं अपने आप को, फार्मर्स क्या करते हैं, दे कैन रजिस्टर देमसेल्फ ऑन दिस पोर्टल एग्री बाजार, जहां पे जो बायर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, कमीशन एजेंट होता है, वो भी अपने आप को रजिस्टर करके रखते हैं। तो जहां सेलर भी अवेलेबल हैं, किसान भी हैं और बायर भी हैं, एक प्लेटफॉर्म बन गया है ना। तो किसान कहेगा कि भाई मेरे पास राइस के 100 क्विंटल्स राइस है, इस वैरायटी का राइस है, बासमती का राइस है, और मैं इस रेट पे देना चाहता हूं। अगर उस रेट पे कोई बायर अग्रीड है तो वहां पे वो उसको टिक कर देगा, अग्रीड कर देगा, ओके सर आई वांट टू बाय दिस। आप दोनों का एक लीगल एग्रीमेंट कंपनी करा देगी और आप उसको अपना सारा सेल कर सकते हो, राइट। कितना बढ़िया मतलब सिस्टम है ये, आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई मोल भाव करने की जरूरत नहीं है। जो आपका रेट आपस में डिसाइड हो गया, उस रेट पे कंपनी उसको प्रोसेस कर देगी। तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है आप देखिए। आपको इस पूरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है, इस प्लेटफॉर्म की पूरी मार्केटिंग करनी है, फार्मर्स को एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है ना, दोनों को लेके आना है। तो any startup which is coming nowadays is mostly technology enabled, सभी के सभी टेक्नोलॉजी साइड में है, और आपका शर्ट पैंट गंदा नहीं होगा एग्री बिजनेस में काम करने के लिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए। यू कैन डू वेल इन दिस सेक्टर। तो दिस इज एग्री बाजार। आपने क्रो फार्म के बारे में सुना होगा। क्रो फार्म क्या करता है, बेसिकली ये
अगर आपने ग्रोफर्स के बारे में सुना होगा तो ग्रोफर्स के को-फाउंडर्स ने ये बनाया था, ठीक है। ये ऑनलाइन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सेल करते हैं रिटेलर्स को। जैसे निंजा कार्ड का भी यही काम है, आपको बताऊं। जैसे इनका पोर्टल होता है क्रो फार्म का। क्रो फार्म क्या करेगा, आप क्रो फार्म पे जाके यू कैन रजिस्टर कि मुझे इतना किलो ये सब्जी, उतना किलो वो सब्जी, ये आलू, प्याज, भिंडी, टमाटर, अदरक, जो भी आपको चाहिए आपने रजिस्टर कर दिया, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और वो ऑर्डर जो है उस रिटेलर के पास पहुंच जाएगा जहां से आपको ये सामान लेना है। तो बेसिकली ये B2B काम करता है, बिजनेस टू बिजनेस। यानी कि जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़े बड़े सब्जी सेलर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो वहां से डायरेक्टली अपना प्रोक्योर कर सकते हैं। तो उनको मंडियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग क्वालिटी भी इंश्योर करते हैं, है ना। तो देखिए, जो चीज आपके मोबाइल में, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी है ना, वो कहीं ना कहीं एग्री बिजनेस से रिलेटेड काम उस पर चल रहा है। दिस यू नीड टू सी, ओके। फिर देहात के बारे में किस किसने सुना है? जस्ट रेज योर हैंड, स्टार्ट योर वीडियो एंड रेज योर हैंड। देहात के बारे में किस किसने सुना है? देहात बहुत अच्छा मॉडल है। ये भी IIM अहमदाबाद के एलुमनाइज ने स्टार्ट किया है। दोज आर माय सीनियर्स, आई टेल यू व्हाट दे आर डूइंग। आप देखिए, शुरू से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब इनको, दे आर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सर्विसेज। सबसे पहले तो ये किसान की सॉइल टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, इनकी मोबाइल एप्लीकेशन होती है जिसमें सारा डेटाबेस आप इनके मोबाइल में, आपके मोबाइल में आता रहता है, जो किसान के पास मोबाइल होती है। सबसे पहले ये सॉइल टेस्टिंग करते हैं, फिर ये एग्री इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मींस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं उस खेत में किस तरीके का डालना है। फिर ये उसमें कंसल्टिंग भी करते हैं कि आपको कितने अमाउंट में डालना है, कब डालना है, कब नहीं डालना है। फिर ये क्रॉप की हेल्थ और ग्रोथ भी चेक करते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करने के बाद ये क्रॉप कैसी हो रही है, सही है या नहीं। फिर ये एग्री आउटपुट में भी मदद करते हैं, मींस आपका जब ये पूरा प्रोडक्शन, आपने फसल ले ली, फसल की कटाई कर दी, उसको कहाँ जाके सेल करोगे, उसको कहाँ स्टोर करोगे, उस चीज में भी ये हेल्प कर रहे हैं। और ये फाइनेंस में भी हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है ना, बीच में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, आपको पैसा की जरूरत पड़ती है और एकदम से जरूरत पड़ती है, वो इतना अर्जेंट होता है कि आप KCC में भी अप्लाई नहीं कर पाते हो, आपको जल्दी पैसा चाहिए, है ना। कई बार ट्रैक्टर कटाई करनी है, कई बार बुआई करनी है, सेल करना है, बहुत सारी चीजों के लिए छोटा मोटा पैसा चाहिए रहता है। तो they provide such kind of facility end to end and they call it देहात। ये काफी अच्छे से काम कर रहा है और ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल है। यूपी, बिहार, MP में ये लोग अभी चला रहे हैं, काफी लार्ज स्केल पे ये काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी ये कवर करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अच्छा, देहात में भी हायरिंग स्टार्टेड है। आप लोग जो वांट टू अप्लाई इन देहात, आप लोग कर सकते हैं। देहात फाउंडर इज माय गुड फ्रेंड। तो आप लोग हायरिंग की, आप लोग अगर इफ यू वांट टू लुकिंग फॉर अ जॉब आल्सो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस स्टार्टअप। कृषि हब ऑलमोस्ट ये सेम काइंड ऑफ है जो हमने इसका देखा था, कौन सा आपका क्रो फार्म, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ये भी रेस्टोरेंट्स, कैंटीन, हॉस्टल्स, होटल्स वगैरह में डिलीवरी करता है वेजिटेबल्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर। ऑलमोस्ट सिमिलर मॉडल है ये। निंजा कार्ड, हैव यू हर्ड निंजा कार्ड? ये भी कृषि हब जैसा मॉडल है। एक्चुअली क्या हो रहा है, हर स्टेट में ना अलग अलग सेम मॉडल काम कर रहे हैं, अलग अलग ब्रांड के नाम से। तो आसाम में शायद अभी तक कोई मॉडल काम नहीं कर रहा है, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट, आप अपना कोई मॉडल स्टार्ट कर दीजिए। दोज हु आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, दोज हु आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ये सारे टेस्टेड मॉडल है, हर जगह चल रहे हैं। सब्जियां सबको फ्रेश चाहिए, हर कोई चाहता है कि मुझे केमिकल फ्री सब्जी मिल जाए, हर कोई ये चाहता है कि खेत से तोड़ के तुरंत मुझे अगले दिन सब्जी मिल जाए। जितनी दिन सब्जियां रखी रहती हैं उसकी वाइटलिटी उतनी कम होती है, उतनी कम उसमें लाइव एनर्जी होती है ना। वो उतना कम आपको नुकसान पहुंचाएगी अगर सब्जी लाइव रहेगी। तो ये चीज आपको, आप ये आसाम में भी इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं, और नहीं करना है तो एनीवे आप लोग एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए देख सकते हैं कि इस तरीके के स्टार्टअप्स काफी मार्केट में है।
निंजा कार्ड को काफी फंडिंग मिली है, लगभग 300-400 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट से उठाए, ऑलमोस्ट 300-400 CR. So that for that they are doing the further expansion. So you can also look for that. उसके अलावा इसके बहुत सारे और भी स्टार्टअप्स हैं, एग्रोजोन, फार्म ERP. तो ओवरऑल मेरा पर्पस ये था आपको ये सब, क्योंकि स्टार्टअप्स तो एन नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं, डिस्कशन हम वी कैन कंटिन्यू डिस्कशन टिल एंड, बट पर्पस वो नहीं है कि कितने सारे स्टार्टअप्स. आई वांटेड टू शोकेस द एरिया कि कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे एग्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है. And trust me, this is the only sector after healthcare which has survived during COVID. Not only survived, but it has thrived. It has grown very well. It is supporting the basic economy of our country. अगर आप इस सेक्टर में अभी एंटर करते हैं, you will learn a lot. जो मैंने आपको स्टार्टअप बताए हैं, ये पहले नहीं थे, ये पिछले 5-10 सालों से ही आए हैं मार्केट में. अगर ये मार्केट में 5-10 सालों से आए हैं, इसका मतलब मार्केट में अपॉर्चुनिटीज होगी, ये तभी मार्केट में आए और एम्प्लॉयमेंट अच्छा दे रहे हैं, है ना. इसके पहले तो हमको खेती किसानी बस पता था कि एग्रीकल्चर मीन्स खेती किसानी, एग्री बिजनेस मीन्स खेती किसानी, ऐसा नहीं. सो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स अवेलेबल. आप स्टार्टअप देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट में आया है कि स्टार्टअप में वर्क करना रिस्की है क्या. No, see, risk is everywhere. Even if you work in the bigger corporates, वहाँ पे भी रिस्क है, बट हाँ थोड़ा सा रिस्क ये ज्यादा होता है कि जो स्टार्टअप सक्सेसफुल एस्टेब्लिश नहीं है उसमें आपको थोड़ा चैलेंज होता है. बट ये कि अगर एस्टेब्लिश स्टार्टअप है तो उतना इश्यू नहीं है, बट आपको वो स्टार्टअप सैलरी अच्छी देते हैं, उसके बेनिफिट्स अलग हैं, आपको इंडिपेंडेंस ज्यादा रहती है, आप कंफर्टेबली बात कर सकते हैं, आप अपने डायरेक्टर से इमीडिएटली बात कर सकते हैं, उतना ऑर्गेनाइज कल्चर नहीं होता है. तो उसके फायदे, देयर आर प्रोज, देयर आर कॉन्स, बोथ द थिंग्स. It is up to you. So that's all from my side, and I wanted to ask some questions. I wanted to cover up some questions. अगर आपके कुछ questions दिमाग में है, anything is running in your mind, if you want to ask any further question, please ask. ये डिस्कशन इतना ज्यादा है, अभी भी मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, बट ये कि आप इतना पहले डाइजेस्ट करिए कि एग्री बिजनेस में ये मान के चलिए, आई कैन गारंटी कि आगे आने वाली जो सेंचुरी है वो एग्री बिजनेस की है एंड टेक्नोलॉजी की, दो चीजों की. तो ये मान के चलिएगा आप. एंड इसमें कोई डाउट नहीं, इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू एग्री बिजनेस, देन आई विल डेफिनेटली विश यू अ वेरी गुड लक. So that's all from my side, and now if you want to ask any question, please. Hello, sir. Yeah, Upali. Yeah, it was such a nice presentation. Thank you so much. It was very enlightening for us because we got to know about many things we were unaware about. As you have rightly said, there were like, जैसे आपने Ninja Card दिखाया and many other such organizations or you may say websites which are working for it. So what are your views on this farm bills? There are so much of controversy going on, and in Delhi we have seen how it has been tackled. So like it's a agri-business, but the focal point of this business are the farmers. What are your views about it? Like it's an emerging field you are saying, but at the same time the farmers are probably suffering, and that's why so much of outcry. So what do you think about it? I'll tell you. Pandey Yes, sahab, yes, actually, the Krupali also told me this about the farmers bill. She raised this, but I request you, as much as you avoid it because of controversy matter now. Farmers bill, some are in agitation. So, like whatever you can tell, what is your view? I think it is okay, but not so much controversy. I understand. No. It is nothing political. We are talking only about the agricultural sector. I will give the technical answer. I will cover the technical aspect of the bill. Views is definitely. I don't want to give any opinion. Opinion is up to you. What you want to decide. आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. Why this bill has been launched? भाई बिल की जरूरत होगी तब ये बिल आया है मार्केट में. There are so different views in the market. और सी वी कॉल एनी बिल कंट्रोवर्शियल. जहां कुछ दंगा हुआ हमने उसको कंट्रोवर्शियल कह दिया. सेम हैपेंड विद CAA, NRC, सेम हैपेंड विद अदर बिल्स. भाई अपोजिशन पार्टीज का रहता तो मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता हूं कि वो पार्टीज का क्या मुद्दा है क्या नहीं है, बट लेट अस डिस्कस द टेक्निकलिटीज. आपको ये पहले चेक करना था कि फार्मर्स, अगर आप कभी किसानों से बात करेंगे, आपके फार्मर्स को
पहले मंडी में बेचने में बड़ा प्रॉब्लम आता था, दे कैन नॉट सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट। अब एक चीज आपको शायद पता नहीं होगा, हम ये कहते हैं यार हमारी इकोनॉमी यूएस की तरह ग्रो नहीं कर रही है, हम कनाडा की तरह ग्रो नहीं करते हैं। हम इसलिए ग्रो नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां के मार्केट ओपन है, वहां पे ना कोई एमएसपी होता है, ना कोई वहां पे अदर इश्यूज है, ना वहां पे मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है। भाई अगर आप उस तरीके के ग्रो करना चाहते हो तो लेट्स ओपन अप योर इकोनॉमी ऑल्सो। और ऐसा है कि इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि आप सारी पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को एक साथ कैटर नहीं कर सकते। इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर सर्टेन पीपल देन इट इज ऑल्सो लॉस फॉर अदर पीपल। बट देखना ये जरूरी है कि वो लॉस कम लोगों का हो, फायदा ज्यादा लोगों का हो, तब तो ठीक है। लॉस ज्यादा लोगों का नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो ये पॉइंट है। फार्मर पहले मंडी में बेचता था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मंडी का सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इतना इस तरीके से वो कर्टल क्रिएटेड है कि फार्मर को जबरदस्ती उस रेट पे उस कमीशन एजेंट को ही बेचना पड़ता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेट्स के ये लोग क्यों इस तरीके का इशू चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर ये जो किसान हैं, बड़े बड़े जो किसान हैं, वो कमीशन एजेंट भी हैं खुद। तो खुद ये पैसे पहले बहुत पैसा कमाते थे, जिनका मार्केट कंट्रोल था, जिसका होल्ड कंट्रोल था, कि जैसे इस विलेज का पूरा प्रोड्यूस मेरे पास ही आएगा। अब सरकार ने वो खत्म कर दिया। अब किसान पर्टिकुलर मंडी में चाहे तो नहीं जाए, वो आपके पास नहीं आएगा, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकता है, दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, कॉर्पोरेट भी उससे ले सकता है। तो अगर इफ यू रीड दिस बिल कंप्लीटली, माय वन रिक्वेस्ट इज स्टॉप वॉचिंग न्यूज ऑन दिस बिल। यू रीड द बिल फर्स्ट, you read the entire bill, then you apply your mind. मीडिया में जो दिखा रहा होता है वो दे शो वन और अदर साइड ऑफ द पिक्चर, बट मेरा पर्पस आपसे रिक्वेस्ट है कि यू ट्राई टू शो द एंटायर बिल, यू ट्राई टू रीड द एंटायर बिल एंड देन यू थिंक। गवर्नमेंट हैड सेड कि एमएसपी विल नॉट बी अबॉलिश्ड मल्टीपल टाइम, स्टिल मार्केट में आप रूमर्स फैला रहे हो कि एमएसपी चला जाएगा। अरे व्हाई यू आर डूइंग दिस? तो आप पहले बिल चेक कर लीजिए क्या है। अभी ऐसा होगा जैसे आई थिंक आसाम में राइस ज्यादा प्रोडक्ट कंजम्पशन होता है, राइट? वीट का कंजम्पशन नहीं होता। अगर आपके यहाँ वीट का प्रोडक्शन हो रहा है या राइस का सपोज ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन एमपी जो यूपी है यहाँ पे राइस कम होता है, वीट ज्यादा होता है। तो अगर अब आसाम का किसान चाहे तो अपना एक्स्ट्रा राइस को जब यूपी में जाके बेचेगा तो उसको 500,000 रुपए ज्यादा मिल सकता है पर क्विंटल पे। भाई वो क्यों अपना आसाम में बेचे यार, जब उसको ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं। वेंडर्स अवेलेबल रहेंगे, वो आएंगे, कॉर्पोरेट्स अवेलेबल रहेंगे, वो वहां जाके उसको जो है सेल कर देगा। आपको अगर वीट चाहिए तो आप यूपी से आके वीट ले लीजिए, आप क्यों महंगा खरीदेंगे? आपको वीट के लिए अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो इस चीज में देखिए, ये ओवर द नाइट नहीं होगा, दिस विल डेफिनेटली टेक सम ईयर्स टू एस्टैब्लिश। आपको हर चीज ये देखनी है कि हर बिल के पीछे इंटेंशन क्या है। इंटेंशन इज मस्ट। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इंटेंशन सही है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, आप स्मूथ एग्जीक्यूशन होना मुश्किल है ना, स्मूथ एग्जीक्यूशन होना मुश्किल है, बट इंटेंशन सही होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग रीड द बिल्स वंस अगेन इन शॉर्टर। आई हैव एक्सप्लेन्ड माय व्यूज। इन फैक्ट आई हैड जॉइन्ड वन सेशन आल्सो इन द मीडिया एंड वेयर वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस फार्म प्रोड्यूस। उसमें काफी आपको मैं बता सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। इसको कंट्रोवर्शियल मत बोलिए, मतलब कंट्रोवर्शियल बिल नहीं है, ये बिल है जिसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, दैट्स इट। Okay. Thank you, Dr. Pandey Saab. Very nicely you have narrated about the bill. Thank you. I think we have benefited. Our participants also benefited about the bill. It was also a very important point to be discussed. I now understand. Okay, because earlier we were avoiding the whatever, if something was happening, we were avoiding this due to our limitation. Okay. Now. Okay, please, Dr. Sir, may I ask a question, sir? Please. Yes, madam, please. Hello. Okay, yes, Mr. Saurabh, Mr. Saurabh, really good work being done by One Skill Advisory. I just want to know, because I think you made a point that these kind of agri-business startups haven't still taking place in the Northeast. Yeah, they haven't. It hasn't caught up in the Northeast. So your advisory, I don't know, is it advisory or academy? Would you be interested? Because I've seen you are your basic service is preparing proposals, and it's
operationalization in the field. So would you be interested, in collaborating with us, because we would like to, focus on Northeast, the youth of the Northeast, Okay. kind of promote this thing among the youth of North Skill in a way it should have an impact. It should result in an outcome. So yeah. So would that be a part of your agenda? Yeah. So let us see if it is related to education or if it is related to startup promotion. I'm fine. Two are my area of expertise where I'm working. Okay. I have just texted in the chat box my LinkedIn profile and also my mail ID. Okay. So we can connect over LinkedIn, and also other students, those who want to open their startup also. If you have any issues, you can always text me. At my capacity level best, I will be able to guide you. Yeah, Mr. Saurabh, actually, I am talking on behalf of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. Okay, this is under the Ministry of Youth Affairs, Government of India. And our primary mandate is empowering the youth. So I just wanted to know, because we would like to, really initiate projects which are, very helpful to the youth, which help the youth in the Northwest. Yeah, in that context I was asking. I'll be happy to do that, ma'am. Either through Professor Dekar or, directly we'll see how we go about it. But definitely we would like to promote this agri-business among the youth in the Northeast. Now, how we do it, we can discuss. Thank you. Yes, madam, it is welcome. Yes. Thank you very much. Yes, Dr. Sonal, please. Dr. Sonal, please. Thank you, Pandey sir. You have given very nice presentation, and it was very realistic. You have shown all the existing examples. We have successfully started these companies, and I feel it personally very nice because I am from electronic background. So I have seen many huge opportunities for the for this any kind of field. Okay, so thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you for my Thank you, Pandey ji. Really, it was a very illuminating lecture. webinar এখন attend কৰিছো Daljit, hello Daljit. Yes, sir. Please, you are in online. Yes, sir. This is a risk also. Please mute yourself. Yeah. Okay, thank you, Pandey ji, again. Thank you, Kumar. Thank you, sir. Thank you. So now I'm disconnecting, sir, with your permission. Yes, sir. Yes. Okay, Sonal, Dr. Yes, sir. Carry on. Mridul Sarma sir has joined. Okay. Welcome, sir. Thank you so much. Okay. Mr. Mridul Sarma, he will be delivering the next talk on the topic facing challenges and tackling them, a guide for the budding entrepreneurs. So before starting his talk, let me he is a business entrepreneur, mainly language technology innovator, who designs and develops the softwares and give it to the society for free of cost. Many of us are using Lassit, a well-known platform to type in Assamese. So let me introduce that he is the man behind who created this Lassit platform. So his professional qualification include his BSc in agriculture from Assam Agricultural University. He has done MBA from Tezpur University. He has done completed management development program from IIM Indore. He has worked in a very reputed companies in a very top level position in like SBI Life Insurance, ICCI Lombard General Insurance, Bajaj Alliance, Integrated Systems, etc. Two of his major innovations are Lassit Keyboard, which was developed for Android, iOS, Windows, and Mac platforms, and Lassit Spell Checker. It is for Android, iOS, Windows, Linux, and Mac platform. So without any more delay, I request Mr. Mridul Sarma sir to kindly deliver his
talk. Sir, please. Thank you, Mr. Sanwal. Very good afternoon, everyone. My name is Mridul Kumar Sarma. So, basically, the topic today we are going to discuss. I'll say I'd rather like to discuss rather than talk from one side. So, this topic is for the entrepreneurs, the budding entrepreneurs who wish to be entrepreneurs, who wish to quit their job, or who wish to choose business over jobs, etc. For those people, and these people, they are basically the guys who are either compelled to quit their job and think for business, or though some of them are actually willing to become an entrepreneur. So both these categories, and the freshers also, both these categories. So we'll take them as our target audience. The thing is that let me share one slide. I think while discussing, I'll show this as present the screen. Okay. Okay, present now. Present now. My screen. No, middle is not coming. Is it coming? The screen is coming? Yeah. About to come, I think. Yes, sir. Yeah. It's coming. Okay. Is it okay? Yeah. You can go for a full screen. Okay. Nice. Very nice. Yes. Okay. I think I should hide this prompt. Okay. So the budding entrepreneurs, they face challenges, they face hurdles, and they get out of it. They find their solutions. Since I'm also like them, I was having a job. In fact, I had worked in 4 companies. I was working for 12 years. But later on, I decided to become an entrepreneur. So I faced the ground realities, the hard realities, the things which I was not aware of, the things which I was not, I was never told, even never taught. The actual tidbits of this process of conversion, I would say, is a process of manifestation from a job holder or a service holder to an entrepreneur. So let me briefly discuss these things. Let me go to the second phase. I mean, the first thing is that the decision making. In the second slide, the decision making. It is the first hurdle, or you said it's a challenge, or this is the first step basically. The decision making process. Whether you someone wants to become a he really wants to become an entrepreneur, or he is compelled to become an entrepreneur for some crisis in his job. So in this, all these things are covered in this process, the first step. Okay, it's like just like jumping onto the swimming pool during the month of December. So we have 2 categories of people: the freshers and those people who are already employed. For freshers, I think it is relatively easier to choose between finding a job or becoming an entrepreneur, because they are not already on job. They don't have to think about quitting job or something like that. So freshers, they are relatively, for them it is easier to choose take the decision, or in fact, if their family has already a business, kind of family business, then it is very much easier for them. They already know
certain things and they get certain support from their own families. I'll come to this later on. Then the decision making process is very hard for the people who are already employed. Many people face crisis in their job. The boss scolds him a lot. He missed his promotion. He didn't get proper bonus. He was transferred to somewhere else where he's not comfortable. Boss again scolds him a lot. Then he gets bad reviews or something like that. All these stuff that actually makes a person's mind to think about quitting this job, or maybe quitting this particular job and joining another one. Then again on the second job, the same thing happens. Then ultimately he gets a distaste. So he wished to. That is his basically wishful thinking. If I had a job, then I think I'll be my own boss. I won't have to care my bosses and my employers. I'll be working for myself. So that is basically his wishful thinking. Had this been, he thinks like had this been. Now he needs to take the decision whether I'll quit this job or I'll do a side business. So the second thing is very dangerous, according to me. Many people think, no, I'll start a side business and parallelly I'll be working also. I'll be getting money from both of these. No, this is absolutely wrong in most of the cases, because we are not superhumans. We have limited time, limited knowledge, limited skill, limited bandwidth, limited mental abilities, everything. We have limited power. We are not supermen, we are not supermen, we are not superhumans. So having a side business will impact both your business and your service life also. So basically it is not advisable. Yes, you can start the groundwork. One is to start the groundwork while being on the job. There are certain advantages also. While being on job, you can get certain responses easier. You can apply for something, say for example, some registration or some documentation process relatively easier than being unemployed. That is one thing, but that is not side business. You have to quit your job, then only you can focus on your business. So this decision once taken, you can go ahead. But again, let us move to another challenge. The challenge is that your family pressure. See, in typical, I don't know about the participants. I think they are all over from Northeast or some other states also. But in most of the cases, our basically we are not from that business background. Even many of us will be the first generation entrepreneurs. But in certain communities like the Gujarat, people from Gujarat or maybe from the Rajasthan, the Marwari people in Assam also, or in Rajasthan also. So they have been in this entrepreneurship for many of the generations. So in our case, we usually face a family pressure. What will happen if you quit the job? Then how will you survive? You don't know anything about business, how to sell or how to do whatever. So that is a kind of family pressure that will be against quitting the job. See, basically you cannot blame your family also, because they do not know the first time you are facing on your job. They cannot realize that, and it is and you are not supposed to share all the tension and anxieties with your family also. That is also not advisable. So simply you have to bear everything by yourself. So until and unless your family knows how to that you are facing some frustrating environment, so they will not allow you, not exactly allow, but they will not give their consent to quit your job. Very few, the percentage will be very lower who actually encourages to quit the job and become entrepreneur. Okay, so we need to tackle this. The family pressure, we need to give them some confidence also that no, I can quit the job. Yes, it will take some time,
but I'm sure, I'm confident that I will come up. I will start from zero, but I will not be at zero because I have already some years of experience in my service. I'm matured enough to take decisions like that. So we need to handle the family pressure with ourselves and with proper discussion with your family in a cool mind. Then I think your family will also understand that yes, the decision will be better to quit the job and to face to start entrepreneurship. Then there is family burden. You have a wife, you have kids, then you have loans. Yeah, you took a car loan, you take a housing loan, everything. These are the burdens basically. So these burdens, how will you tackle these burdens if you quit your job? Because in your job you are getting some salary and you are provisioning them for all the expenses. So this has to be taken care of. We'll come to this part, how this family burden, I mean, that can be taken care of. How will you get confidence to quit your job? That, for example, if I don't even earn anything for 1 year also, nothing will happen. So we'll come to this a bit later. The preparation. Okay, we have taken a decision. Now let us prepare. We've taken mentally. I am prepared. Okay, This is final. I am quitting this job, once for and all, and I'll start a business. Whatever be the nature, I'll start a business. I have convinced my family. Okay, that they are also now supporting. They have given their consent to uh, support me in my venture, new venture. That will be an adventure basically. Now I need to prepare. I need to start some groundwork. So what will be the groundwork? First thing first, expense reserve. And I told that that family burden, you need to tackle with the family burden. Yes, you have a family burden, you cannot get away with it. If you have this family burden on your heart or it's in every time, then you will suffer some heart attack, something will have a stroke. So better not to do that. You start building one expense reserve. Say every month I have this much of loan, this much I need to run my family, this much money I need to keep as a some petty gas or something like that for some emergency. This is my medical expense for my parents or something like that. So you have a basically certain amount of expense every month. It's an every month which you have been spending from your salary, the monthly salary. We need to keep this expense. Plus, say you can think about keeping more than 10% more or 20% more. That reserve you have to keep for 1 year. The reason is that, see, the first month is okay. You had some savings on your account. Second month is okay. Third month is okay. You have taken out your provident fund also. You have taken out your gratuity also. So ultimately, these things are again depleting. These are not like that. That every month you will be getting from your employer. Since you don't have an employer now, no one is giving you any salary or something like that. So you are spending from your reserve. So you need to keep this expense reserve. The best thing is that having an expense reserve for 1 year will help you to be mentally free from the headache. This is a very big headache. How will I survive? Um, buy vegetables? How can I buy these things? Day-to-day expenses I need to meet. I need to buy my parents' medicines or something like that. So if you do not have this expense reserve, you cannot spend this money. Then you will be, you will be very depressed, very frustrated, and it will make you restlessness. And we all know that being in a restless state, it actually adversely impacts your decision-making ability. One should not take a decision while being on empty stomach, and one should not take a decision while being angry or in a depressed state. So that is a universal truth. So we need to be in a free mind so that I can spend my whole day in my new venture. Okay.
So this thing is very, very, very important. The first step for 1 year, the groundwork is that if you think that I'll be quitting, say this is the month of November, almost December, I'll be quitting my job on say maybe next October, November, like that. So within this period, I'll save, and during this period, I'll save means I'll save like anything. I'll become a measure. I'll become a measure. I'll save everything. I'll take note of every unuseful expense, and I'll accordingly keep my savings. Okay. So in this process, basically, again, you'll have to be very careful. See, when we have money, we buy things or we invest things, we spend things like anything. I mean, we don't bother because then this month I have spent, next month I'll be getting again. Since you will not be getting money and things, so do not take any new liability. If you are supposed to change your car, keep it. Do not take a new loan. If you are supposed to take a big TV, which maybe, and nowadays actually what we do, we basically swipe in our credit card and we ultimately make it an EMI. This EMI thing will be very dangerous. Those EMI which you already have, keep them like that, but do not start any new EMI. No new liability. You should not take any more newer liability. Rather we should be thinking like how to reduce this liability, how not to take new more headaches. Okay. So that is one very important point. If any expense can be postponed, then it should be. Then keep filing ITRs. This is very important. The service holders, if you are on a service, then basically we get Form 16 and all, and we need not have to actually file the ITRs. Actually, I did not. Once or two times I did file my ITRs, but later, so I did not actually so much interest. So I was not much aware also. But this is very, very important. When I came to know, when I left my job and started doing these things, then so my CA told me that you had to actually you are supposed to file the ITRs for at least 4 years. So even if you don't have to pay taxes to the government, income tax or whatever, you should keep filing your ITRs, income tax returns. Even if it is zero, the return is zero, but it is mandatory in some cases, like you have to provide 3 years. And nowadays you cannot do any ITR filing on a backdate basis. Earlier it was possible. So now that backdation is not possible at all. So filing an ITR, this is very, very important. We have to be very meticulous. Filing ITR and downloading your bank statements from your bank site. Every month you should keep a folder in your hard drive, computer hard drive. Everyone has a hard drive computer. So make a folder like finance, personal finance, like that. So you have to be very meticulous. Every month on the first day of the month, we should take care of these things, downloading the bank statement of the previous month and saving it, naming it as that we do according to that particular month. So this is a very important step. So not filing ITR for 1 year, maybe it will impact your start of your business, because you'll have to again wait for 1 more year, because if you had not filed for the previous 3rd year. Okay. Then you need to keep a strong network. This is I'm talking about, this is basically groundwork. This is while on job. Okay, this is while on job. I'm talking about the people who are already employed, who are thinking about quitting their job. So this is important. This point is why this point is important, to keep a strong network. See, this is basically a liaising. I'm on a job. I have my clients. If I do bad to them, then they will not entertain me if I come back again. I have seen many people, especially in insurance also, I had seen that many people do that mis-selling. They mis-sell to the customer and later on they cannot show their faces. So this is bad. You should keep a strong network. Personally, I can tell you one personal example. My first job was in a Wipro. So one customer from the 2003 and 4, he again became my customer on my second job. Then
later also, in my third, fourth job also. And last 2 months back also, he bought things from me. So that is my customer. He has become a permanent customer. He takes advice. He seeks advice from me in some other cases also, while buying, say, maybe where actually he thinks that I can give him better advice. So that is very important. Keeping a strong network with your existing clients. See, what we do basically, once we change a job and we do not keep any relationship with the previous clients, maybe at one point of time we used to share the same dish, like we had that kind of friendship. Once we change the job, so there is no contact. So basically, it's a kind of relationship management also. So keeping a proper liaison, keeping a proper network, it will help you, because the art is down. You never know who can come back to your life again after, say, maybe 5 to 10 years, 5 years or 10 years or maybe 20 years. You never know. So always keep a good relationship with the clients or their clients or something like that. That keeping a proper network is very important. Then we'll face some other challenges. Now that we have made up our mind and we are ready to jump into the venture, we have done these things also. I have an expense reserve. I do not have not taken any new liability. I have filed my ITRs. Okay, I have my own liaison with my own clients also. Then other people. Now we need to take a decision whether we'll be going for trade or manufacturing. See, basically, everything is sales only. Everything is sales. Even teaching is also a kind of sales. You sell thoughts, you sell ideas, we can sell it. So everything basically is sell. We are basically either seller or a buyer. So in trade also, trading means if you want to open a shop, you want to sell some product or maybe some service, you have taken some kind of franchisee. See, I'll not go in detail with this kind of the business avenues. There are a lot of business avenues, you name it. Taking franchisee, having dealership, having distributorship. So these things basically come within the trade segment. Okay, we buy something, some product or service, and then we sell. And manufacturing. See, manufacturing is always encourageable. It is always lucrative. You become an industrialist, you become a manufacturer. So it's a bigger role. The perspective is much bigger than trading on some products. And both of these have their own pros and cons. Trade is okay, your risk is small, not much. Manufacturing, yes, you need that break-even time actually is lesser in case of trade. Maybe within 1 year, 1 or 2 years, you will be getting a break-even. But manufacturing, maybe you will have to wait for 3 more years for first level of production, and maybe say another 6 months for the first revenue. But there are certain other aspects which I have faced. These things these things are not widely known. Basically, I don't know. Actually, I hadn't read. In trade and in manufacturing, the biggest difference is that some indirect benefits in manufacturing. Indirect benefits means for trading, the banks are usually reluctant to provide you loans, finance. Usually reluctant. I'm using the words usually reluctant. Okay. But then manufacturing, they'll be coming to you. Once you approach, then you don't have to go to them again. They'll be coming to you, and their provisions are much easier. Actually, they find a comfort. They're in a comfortable zone in providing loans, term loans, or any other loans for manufacturing rather than trading. They are comfortable in providing personal loans. They are comfortable in providing two-wheeler or bike, car loans, home loans, but they find not even home loan. They find difficulty in providing loans for trades. But for manufacturing, it is easier for them also. And you will get subsidies. You will get subsidies if you, as per the provisions of that particular term loan, you will be getting tax holidays. All these benefits are there.
So in manufacturing, I'm including the things like rice mill, manufacturing, because you can um, process the product and create your own brand also. So choose accordingly as per your convenience. But jumping onto manufacturing cautiously will be much more bigger opportunity for you on in the long term. Okay. So in trade also, the limit scope is a bit limited. You can grow to a certain extent, but in manufacturing you can grow up to extreme extent, because once you and experience also counts. Being a small manufacturer, you get some 3, 4, 5 years of experience. Then after that, you will get some bigger loans where you can take much big. Or maybe you can jump into some other venture. Okay, so that is one point. Here you have to take the decision. I can go for trade or manufacturing or a mixture of this. That can also be possible. For example, you have just one example. You have a rice mill along with a oil mill. Okay. Now you start packaging your products in your brand, and you have an outlet. You have a distributor. So you're trading also. So this is also possible. Then documentation and registration. So see, nowadays the registration and documentation part has become a little bit easier, and it is very difficult because in the government offices you'll face a lot of harassment. So this process should be started as a groundwork. Registering, I think in the previous sessions of this webinar series, people might have told you that how to do, what kind of registration is required. So income registration. Then if your manufacturing unit demands that the clearance certificate from the pollution department, so that documentation is important. Your trade license is important. So these are basically documentation and registration. You need to find out how you do. You can do it yourself also, or you can employ some other third party people, third parties like, for example, indiafilings.com. They also do things by charging a fees. So sometimes it is easier to give some money away to the third party service provider than running days after days to the offices for just to do yours by yourself. So this is a point that should be kept in mind. The documentation and registration you should not delay. Once you decide your districts, then the trade or manufacturing, the segment you wish to jump into, and then accordingly start the documentation, registration, etc. Okay. Documentation in this case, say that your business will be say kind of proprietorship business, or you wish to open a company or limited liability partnership. So these things are to be kept in mind, that we need to do all this stuff before taking the bank loan or etc. Because bank, once you approach the bank will ask for your all the documents. They will ask for project reports also. Then creation of collateral. This is a very important point. If you have money, you have a pool of money, buy land. My advice, simple advice: buy land. Don't buy gold and other mutual funds also. Okay. If you have a good sum of money in your mutual fund reserve, if you have an opportunity that you have got some piece of land, say maybe 1 kotha or 2 kotha, also buy this. So this is basically, it will serve the purpose of a collateral, because banks see whatever the government says that we should become entrepreneur. People should come for being entrepreneur. They will get this benefit, that benefit. The banks will support. So these things are on books basically. Practically, I have found out whatever the government says, the bank goes against them. Bank will say, "Oh, we haven't received the circular." So these are the things they will ask for collaterals. If you have collateral, then the getting the loan is very easy.
So what is the collateral? What kind of collateral you will provide? They will take, maybe say they will accept some LIC policies, land. So land is the best thing, and as such, land is the best measure of, I mean, best way of investing your money, because the land value, it goes doubling every 2 years. The thing is like that. So it will become a very good collateral if you can buy one piece of land. Maybe it is on a outskirt area also. That should not be a problem. So there is a creation of wealth collateral. You can even think about some LIC policies also, because ultimately bank will be asking you for collaterals. No doubt about it. And again, we need to prepare one project report. This thing is very important. Without any proper project report, bank will not go ahead. So keep in your mind what kind of projection you can make yourself. Like, say, we have started with this thing and this much of capital, then within 2 years, 3 years, 5 years down the line, 10 years down the line, you should foresee, like, maybe this should grow like this. Okay, and this project report, you most of us will not be able to prepare it as per the bank's norms. So you need to take help of one chartered account. So you need to find out one proper good chartered accountant who will charge a fees. Don't bother. You will charge a fees of, say, 5,000 to 10, maybe 10,000. Don't bother about the money, the fees. Okay. But he will provide you a very good project report, which will save time, and discuss everything freely with him, that I wish to go like this. So do not show my business as a very small thing. So if you don't see, some CAs have a habit of, I mean, you're hiding your income, saving your income tax. So these things are not basically good. I mean, it will hamper you in the long term. If you have revenue, you should show it. If your tax is due, you should pay it. So that is the thing. And now the second thing, in the preparation, once you have prepared the project report is important. It will be, you may need to submit it to the district industry office also, if you are going for some kind of manufacturing or like that. So the project report will be required either or today or maybe day after tomorrow. So it will be required. So then you need to find out, you need to take the decision. I'll be using my own savings, or I mean the money I have saved for the last 10 years in my mutual funds, in my SIPs, or in my insurance things, then maybe PPF. So just need to compare. You have money, you can use your own savings, or you can take the loan. Sorry. Hey, hello. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, audible. Don't worry. Carry on. Okay, thank you. So the thing that happened to me, basically, I was applying for a loan, but I could not provide a collateral. So bank denied the loan. So ultimately, I pressurized them that, why don't you give me under the Mudra scheme? So at that time, the Mudra scheme was introduced in 2015, end of 2015. So I applied for the Mudra loan. I told them that you provide me 7.5 lakhs, I will provide 2.5 lakhs, and accordingly, that limit will be 10 lakhs. Okay. And apart from that, I had already invested in the infrastructure and all. But bank was very reluctant. So ultimately, they have given me that loan, but it is just a peanut. So I needed a bigger loan, but I don't have the collateral, so I could not get a loan. What I did, I spent my savings, but that was the biggest mistake. I could have bought one small piece of land also, using that savings. So that money would have been mine in some other form.
and using that loan, I mean, sorry, giving that piece of land as a collateral, I would have got a bigger loan. But that idea I did not give. Now I'm sharing this particular idea. If you have savings and you have opportunity to buy a piece of land, so go for it. It will help you in later period of time also. So you can again use this land for another loan. Now, thing is that spending your savings is not advisable from my side, because we people are not much savings savvy. I mean, we find very difficult. We would like to save. We like to spend. We have a bad habit. We like to spend. So savings is some, say, maybe saving an amount of 10 lakhs over a period of say 10 years or maybe say 8 years. So it is not easy. It is easy if you are very meticulous, but it is not easy because we do not wish to save. We like to spend. We like to go party. We like to spend our money like anything. So savings is difficult, and you should keep this saving because if this savings will help you in some other kind of emergency also. You never know. God forbid, if some kind of emergency comes up, some unfortunate happens, then you need to spend this savings. But I can advise you to use your savings to buy a good collateral which will help you in, and you will have a property also, you will have an asset, and it will help you get a proper loan also. So that is important. So just don't liquidate your own savings and spend in your own business. We'll face some other challenges. These are not basic challenges, just points to be noted, like infrastructure. Infrastructure, you have decided to do a trade, kind of open a trade. Okay, maybe is just for an arbitrary hypothetical example, like you want to start a showroom of maybe say Sony. Okay, so here you will be in dilemma, like I'll be making it a very beautiful showroom, or I'll keep the reserve. I mean, I'll compromise the infrastructure, and rather I'll buy materials. So here you need to take the decision, like the infrastructure part. In case of infrastructure, it is not easy to change the infrastructure at a later period of time. Many times we think, okay, for the starting we'll do this, we'll have a small room. Maybe after 10 years, if our business goes well, then we'll expand it. But this is a very bad proposition. It's a very dangerous proposition to think like that. Whatever you think today, the time will fly like anything. You'll regret after 3 to 4 years if you wish to change your infrastructure. That is very important. If you wish to, say, construct a godown, if you have space, make it bigger. What is the harm? You make it bigger, because today building a godown, say around 5,000 square feet with that area, the cost will be the same if you renovate it after say 3 to 5 years to make it just a bit bigger. The renovation cost is very high. So once for all, if you have space, then you go for a better infrastructure. That is my advice. Do not think of changing. Okay, business अच्छा होगा तो इसको ये कर लेंगे, वो नहीं होगा तो नहीं करेंगे. So that kind of attitude will hamper your business, because ultimately it will become a loophole in your expenses. Okay, so do it once for all. Think about proper infrastructure so that the customers or whoever will feel at home, will feel a modern state of art, this thing, like so that kind of, it will vary, of course it will vary from business to business, but that is a general concept. You should have a good office, you should have a good a sitting area or something like that, whatever.
we again need to think about the employees. Once you have started business, I mean, you started the venture, okay. So you need to find employees. Either he may be he may be your salesperson, he may be your accountant, or he may be the sweeper of your office. So you will be requiring employees. Okay, you will be the boss. You will be the boss. Now many people, what they do, they provide very little salary to the people, employees. So this is a very bad proposition. Ethically also, you should not provide below per salary. And you know what is the caveat, like providing low salary to employees? See, at many times, many of the employees, many people leave their quit their job because they are underpaid. They work from morning 9 till 8 p.m., maybe 10 p.m. in the month end also. During the month end, they work all night, but end of the month they get below per salary, which is not as per their expectation, and as per their the service they have provided. So they feel offended. That similar thing will happen with you also. If you provide a very below per salary, how will he run his family? So you should think like that. Well, if your employees are happy with you, they will save you money in some other things. For example, if you say, for example, you are a trader, you have a showroom or something like that. If your employee is not happy and you are not, it's an every time. I mean, you are not sitting from morning to shutter open to shutter down. If you are not sitting in your cash counter or monitoring these things, so there may be leakage. Leakage in a sense, someone might sell without your knowledge. They will not keep it in the accounts, or maybe they can steal these things also. These things actually happen. So employees should be treated well. The like you, if I like to be treated well, I should also treat other people well. So that is the one important thing. Many people may advise, no, you give him 3,000 rupees, that will be okay, and come up in a distance and all. Then provide him a decent salary. Okay. So that is one very important point. Then accounting and MIS. Okay, these things are very terrible things. The accounting, personally also, I do not like accounting. Somehow I passed business that accountancy subjects in my graduation also and MBA also. But this accounting is important. Having a proper knowledge, a proper awareness. You need not be an accountant, or you need not go through all the hard making your own balance sheet. But you should be quite harsh with these terms like what is GST. You should know what is GST, how the GST is charged, how the GST is passed, or either on PAT also. The taxation you should know. The basic your income tax also. Why, how much income tax will be charged? Because this thing will help. Your CA might want to show some. He might feel that, okay, let me save some money of my customer since you are his customer. So he will show lesser revenue. So that is one practical problem. Many CAs have that old habit, very bad habit. They will not show much the total revenue. They will hide some income. I mean, hide some sale. So hiding a sale is very bad thing, because hey, if you should think about the turnover, the yearly turnover, annual turnover should be good. If your annual turnover is good, then bank will provide you a supplementary loan. Just think about, if you wish to lend some money to two people, one is very poor, who is where the getting refund is not assured, and one person who can refund your money properly, or who is very well to do, then you will obviously be comfortable to lend money to the person who is doing fine, right? The same thing. If your turnover is good, if your business is prospering, if you hide your turnover, so that will become a setback for you. So you will be on a stagnant state. So turnover should always be shown, and if you are not aware, your CA will do these things for you. He will just reduce some turnover and save you some taxes, so which is not actually required. So for these things, actually, the account basic, the fundamental approach, you can go through any website also, just or maybe you should watch some YouTube videos also. Very beautiful videos in almost all languages you'll find across, like the fundamentals of accountancy, fundamentals of bookkeeping, like that.
They will explain you in a very simple domestic terms. And this MIS. So MIS is Management Information System. So what is MIS? Today I have a manufacturing unit or something. I have a manufacturing unit of say television sets. So today this many televisions were produced in the assembly line. Out of that, say maybe 3 or 4 are defective. Then packaging is done or not. All these things, the all processes, your sales figures, everything. This sort of information it comes actually under management information system. So there is a technical term. So you do not go much deeper into it, but whatever you do, everything should be documented. The kata. Uh, there is a popular saying like Marwari kata. Why? And this is a very appreciable thing. They know how to keep proper accounts of everything. Like they'll, if you ask a 5-year-old data also, they will give you. Okay, you have taken this much of money, you haven't returned or something like that. So whatever they can find out. So that kata, that note, bookkeeping, I mean that taking note of everything, it is important. So initially you may go for a tele also. Tele is one important. There are lot of other softwares also, and fundamentally you can keep everything, every detail in your Excel also. I mean MS Excel or whatever in the open source products also. You can spreadsheet. You can use any spreadsheet. Just for an example. You can use any spreadsheet. There also you can keep the initial information, which you can later submit to your chartered accountant, who will again finally prepare the final documentation. But that is important. Whatever you do, if you are a proprietor of your own business, if you have spent some money on your say maybe research of your mobile or anything, so you should take it as a cost. You should write it as a cost. Yes, of course, if you use it for your business, so everything should be there. Then maybe there is one more thing. Nowadays, we used to buy many things from online, even including refrigerators, TVs, printers, computers, laptops. So always buy these things against your GST number, because you'll be getting that input refunded. I'll not go in much into the depth of these things, but just remember that once you start your business, you will get a GST number. You will have a GST number. If you buy anything for these things, you should always buy against this GST number, so that you can get some input refunded. These taxation subsidies, I have almost talked about the taxation. You should know about the taxation. How much tax should be levied on this thing? I mean, say you have three more products. So there are different slabs of GST. You should be a bit. I mean, these are very simple things. Very easy. It's nothing like. I mean, it's nothing like. I mean, textbook words or something like that. Very simple example. For example, electric goods, 20% of GST, 28% GST is charged. So maybe in paints, 18% GST is charged. In some agricultural products, handloom products, the GST is not charged. It is free basically. So these are very simple things. You should be aware. And subsidies. Those who opt for, I mean, starting manufacturing or some processing industry, something like that, you should be keeping one thing in your mind: how to get subsidies. Okay, you will almost all the government departments, they have very good schemes, including agriculture and some almost all the governments. They have very good subsidies. They are ready to provide the subsidies to the willing people. But many times they do not find suitable people to provide the subsidy and that final scheme also. So just keep in mind. Actually, one thing happened. One of my friends, he's quite elderly to me. He opened a rice mill and oil mill also, and all this processing. He spent his own money in the project. I told him actually, you should have taken a loan. You would have got some low rate of interest also, and you would have got some subsidies also, tax holidays also. So that is the thing.
if you are getting something from the government or something, some other good agencies, so you should go for it. And taxation means tax holidays also. In many manufacturing industries, the tax holidays are offered. Like say for the next 2 years, 3 years, you need not provide this tax, that tax. Even taking the electrical connection also, if you go through proper channel, you will get some subsidies. Say you have manufacturing unit, you need a big transformer. So if you go as an individual, you will not get. They will be charging you like anything. But if you go to proper channel, like you have applied for, you get an approval from DIC and forwarding from bank also. So there will be getting some good responses. I mean that will save your money. You can get things processed in a smoother way. Then monitoring. This is very important. You have started your business. You have seen good good growth. Then you have taken a leave of say 20 days with your family. Have gone outward. You did not even think about your business, not taking the daily monitoring, the reports. So this is not actually healthy process. You need to monitor your business. Whatever business is a small, is a large industry, the monitoring part is very, very important. Until and unless you do the monitoring, you will be actually you will actually ruin your own future. Because once you do, if your employees do not know that you are monitoring them, so many of them all are not good. Okay, so many of them will be just sitting you. From my personal experience, I am telling you, if you do not monitor them, they will do things that are not supposed to, that are not good for your organization. I mean, this thing. So taking data, you may not sit here in your office, you may not sit on your that manufacturing thing you need also, but what you need to do every day, take account of everything. Is there any absence of employees? Has any employee taken leave? If someone had taken a leave of 2 days, has he come back? Whatever the sales figure, the rejection figure, all this stuff. And one more thing that is very important, say in case of trading also, in case of trading and what manufacturing, say we will be buying certain things. Say if you have a retailer or if you have a wholesaler, also, you will be buying things on cash or on credit. There are two things. You can buy on cash or you will go for it. Usually credit is there. But always remember one thing, if you provide cash and if you can provide cash, you will get benefits. And similar thing is also in volume. If you buy say 100 unit, they will charge you something. If you buy 200 unit, the discount structure will be better. You'll be getting better discounts, better commissions, everything. And you can sell at a competitive price. So cash and credit, these things to be kept in mind, that cash is always better. And that the other thing also, like customer, if a customer opts for credit, then you need to charge him high. Actually, I also made this mistake. Many people actually they have cited me, like they are all known to me, but they will initially provide some cash, then later on they will take things on credit, and I have given them that same discount also because they are known to me, and many of them are bad debt like that. So just you need to find out, if a person provides you hard cash, you give him one little bit more discount. That will encourage the customer also to provide cash. And for credit should be as such strictly discouraged. And one more thing, if anyone, whoever he is, takes credit, always keep a blank check from him. I mean that check, not blank check, like do not put the date, take the amount and his signature. You keep it, whoever it is. If you make this habit, then there will not be any bad debt. And why? Because if he doesn't show up, doesn't pay your money, you can simply put this check on to his bank,
You get it bounced for 3 times, then there will be a criminal offense. He will go to jail. So because of that, he will be again coming to you because he has a stake with you. So that is very important because credit is one very dark area because of which many businesses fail. That is important. And of course, that installment of your loan, that is very important. Your loan should be ETR, not PTR. There are two terms in credit management in banks, most of the banks, like ETR, excellent track record, and PTR, poor track record. You should not be counted under the PTR category. You should be always be counted under the ETR category. That will help you in improving your CIBIL score also. I think all of you know about the CIBIL. Okay. Now that your business is running, you have started a business is running, you will face some changes. There are some very funny, some changes, those are actually very funny. There is a sense, your profile will be changed. Okay. So you are a sales manager, you are an area sales manager, you are a branch manager, you are a regional head, or many things, or maybe you are a marketing executive, whatever. But after say quitting the job, you have opened one say retail store. So people will come to you and tell you, अरे यार वो इतना अच्छा जॉब था क्यों छोड़ दिया? अरे तुम रीजनल मैनेजर था क्यों छोड़ दिया? अभी कैसे दुकानदार हो गया? So this kind of languages will be you will come to here, but this is very funny actually because again that sometimes I feel quite disgusted, like people why they provide so much of importance on some designation or something like that. But in some positive way, you should think, yes, I was a regional manager, I was a sales head, I was a this thing. I was as a sales manager, I was a branch manager, whatever. But now I am the CEO. Think about yourself as a CEO, Chief Executive Officer, or you are the Malik. The word Malik is a very big, I mean, influence, or it's a very respectable word, Malik. I am the boss, I am the owner. So you take the sense, you manage it like that. You take the sense. People, when I say something which is not palatable to you, you tell them in that way. I was always working under someone else. Now I am the CEO. I'm the boss of my own business. So you need to tackle these things. But I'm definite that each and every one of us will somehow will come across this situation where they will be reminding you about your previous profile, your previous company profile. Okay. And there is one more thing: business expansion. Once you have started your business, it's running smoothly. Now you should be, and you will be thinking about expanding your business. Say for example, if you have a particular retail store, so or you have a say rice mill. Just for example, so once you have reached your break even and you are a little bit settled, you have started your savings also, then you should think about the expansion. Now the thing is that the expansion will be what sort of? Okay, so what I deal with the bathroom items like sanitary hardware, paints, tiles, and these things. So recently I have started that electrical part because while building a house, everyone needs this. So earlier the customer will go to some other shop. So why not I offer them in my shop only, so that they will be in my place and they will not go to any other competitor. Okay, so that is important. That is related. Okay, if you have a rice mill, you can open one more. You can buy some more machines which will mill the oils. I mean that you can start with a masala processing industry. So that will be similar, and some other that will be altogether different. You can jump if the new venture may not be related to your
existing venture also, but here you need to take the decision, you need to do the analysis. Like if you invest in your new business, will it be beneficial for you? Will it be more profitable, or investing in your existing business is more profitable? You need to calculate properly, because a wrong calculation will become a disaster for it. Okay. And usually if you invest more in your existing profile, existing business, the profit will usually go high. Just an example, you have bought some raw material, say the rate is 1 ton, rate is say 10,000 rupees per ton. You usually buy as 5 ton in a lot. If you have money, if you buy it, if you just double the quantity, you will get some volume discount. That is economy of scale. They will offer you say 1 or 2% more, and again you are buying it on cash. Earlier you had taken credit from the vendor, now you are dealing with cash. You have a bargaining capability. अरे भाई cash दे रहा हूँ, आप कितना बोलो, rate बोलो. अरे वो तो इतना बोल रहा है, दूसरा इतना बोल रहा है, आप कितना बेचोगे? You should bargain like that, because bargaining will always give you some added mileage. So recently it happened to me. I was just telling one dealer, I mean one vendor, that they are offering me this. I said, oh, no, we'll offer you 1% more. Maybe yeah, from some other vendor, I'll also get 1 or 2% more. So that is one thing. So you need to be very clever. You should deal it like that. So the calculation is, if I get better benefit on investing new amount, infusing new capital into my existing venture, then go for it. Or if your existing business is stagnant, that is you have already fulfilled all the requirements, then you can start a new venture. Of course, cautiously. You should be hopeful. See, the journey of becoming an entrepreneur, whether you are a fresher or you are already employed who has quit his job and who has started a new venture in entrepreneurship, business, whatever, you need to be hopeful throughout the journey. Why? Many people face some difficulties during this struggle, especially the people who had quit their job and started a new venture. They will face some struggle. They will start from zero. They will start from zero because they will be starting from the stage where they have left their job, they have no income. Then they will be again, they have started again earning some money. And at this stage, you should start saving also. So usually in retail business or wholesale business, there basically it is different from the service. I mean that style that you get salary, then you spend this much amount to loan, then you pay this bill, that bill, then only you save on SIPs or something like that. It's not like that in case of business. You should save daily. Say for your just for example, if you have sold something for say your today's daily sales collection is say 20,000 rupees, 1 lakh rupees, whatever. Accordingly, you should save some amount on everyday basis. So then only you can build a corpus. Otherwise, you will not be not having any money for yourself. You will not be taking any money to your home, because investing in business is an endless process. You can spend crores of money on any business. There is always scope for further investment. So basically, you need to save for yourself also, for your personal expenses. So start saving daily. That is one very important aspect. Of course, it should be reliable. Daily savings are usually not much organized, but you should find some reliable people who have a good track record. You can find them. And in this process, I mean, many people face difficulties like they face issues with say credit, lack of sales, something like that. So there are many people who will discourage. You had been doing a very good job. Hello.
Yes, tell me. Okay. So many people will be there who will be discouraging you, again reminding about your previous job, that you are doing fine on this thing and now you are facing struggle in this thing. So never quit this thing. Never quit the venture and rejoin a job. So that is a very tricky thing. Many people will offer you, why don't you join a job? Why don't you join this job? So once you start a job, you delete your email ID from Naukri.com and the other service, I mean that job websites. Okay, so that is very important. So once you someday you find some struggle on your business, then that day will be again thinking about your job. "Arey, my job was good." No, you had a bitter experience on your job, so you have come to this stage, or maybe you have already thought that my new entrepreneurship will be better than my previous job, so I'm into this. So forget about the past. Never think about the rejoining the job. Never quit this venture, and have patience. Patience is your best friend. Let me cite one personal example. So one day it was quite raining. So one morning it was raining. So the whole day there was no sales. In the afternoon I came to, actually I have a late lunch. So in the afternoon I came for lunch. So my father, he told me, ask your boys to close down. Then don't go again. Today there will not be anything like that. So I didn't listen to him. I went back. Then in the evening, after the rain had ceased, so there is a huge sale. I got very good two customers. Then, so that is the thing. You have to be very patient. You don't know when sale happens. So that is one thing. So that is very important. Many people will be there, will be discouraging you. And I'm telling you this again and again because I had this stress again and again. People will be reminding you your previous job was good, and will be offering, why don't you go for a job like that? So do not listen to them, and be always careful in choosing friends. In choosing friends who can give you good advice at your time of distress, because you will be always having good friends at the time of your fortune, but during distress you need people who may not help you monetarily, but psychologically you need some good friend, not your family. Yes, of course your family is very, usually always good friend, but many things, the stresses of your service life, whether it is service life or business life, the stresses you should not share with your family. That our work life and personal life should always be different. You should have some good friend who can always encourage you. I had some friends when I was a bit depressed one in my previous job, so they told me, they helped me in taking my decision why I should quit. If anything happens, if I cannot find anything, then he was ready to support me like that. No, I'll support you. So be careful while choosing friends, and always be in touch with people who are actually ambitious and they're positive. Staying with negative people, I have met, because why I'm saying this is a very general concept, but I have faced people. Many people, actually, I have found some people, I don't know whether they are knowingly doing this or unknowingly doing this. They're discouraging. Your job was good, something like that, this, that, and like that. So I didn't listen to them. Okay. So basically, this is a kind of journey. You should not think about a rocket science, and taking a decision is not much difficult. If we come from the first slide, then again, the decision-making process, it can be eased out. Whether you are a fresher, whether you are employed, you can take a good decision. Please don't, I have already told. Mridul, I am sorry, some noise is coming. From where it is coming, I don't know. Oh, sir, 1 second. Yeah. Is it okay, sir? Hello? Now it is okay. Okay, thank you. So the challenges we have faced, let me recapitulate. The family pressure, family burden you have taken care of.
Then you need to prepare with all the documents, registration, etc., creating a collateral, everything. This is a very simple process, a simple flow. It's a very simple flow. And always keep in touch with good chartered accountant. That is also very important. So thank you very much. This was from my side. Then I have shared my views. This is not basically no theory is there. Actually, thank you, Mridul. You are our alumni also. So you have nice. Whatever my feeling before giving the mic to Durlab, let me tell you have really giving the practical knowledge. It is very useful for the students who have attending and all the participants who have attending, because starting and doing entrepreneurship, a lot of difficulties everybody may face. On the line, you have really mentioned very nicely the points, whatever is very important for the participant. Now I request you, Durlab, please. Okay, Durlab. Yes, participants, if you have any questions, I think no, it's earlier. And I'll provide my number to Dukoteka sir, or maybe and Mridul. You if can any give participant at that. No. What actually Yes, you can do? You can give your email in the starting in this year. Okay. Linkage also, and giving to me also. Your number is with me. If somebody asks me, certainly I'll give you. Okay. Sure. And perhaps so nicely you have presented, slowly and nicely you have presented all the materials. I think our participant has understood very nicely. But to be an entrepreneur, I think they can have a chat with you right now. I don't know. Okay, thank you from my side. Yes, yes. Okay, Durlab. Okay, thank you, Mr. Mridul Kumar Sarma. You have very nicely grouped the various challenges into 3 categories. You have discussed everything starting from how to tackle the family pressure, how to prepare ourselves to become an entrepreneur, and you have also given many important, small but very important tips regarding your credit management and etc. So, so you have also discussed some kind of ethical kind of things in your like proper project management, preparing proper project report, and loan or use how to use loan or use for saving, etc. You have also discussed some kind of social issues, like how to tackle ourselves when we are somebody is selling it, when our profiles are being changed from some job service to other, when we do start our own business. So very nice talk session. I think all the participants are benefited. So they will be contacting whenever. I think will be will help. We need help from your side. So thank you. Durlab, one student say a very nice comment has given, learn a lot in such this Jason Taludar, learn a lot in such short period. Thank you, sir. We'll get in touch with you. This is a very important feedback we are getting instantly from the participants. Very important. Thank you so much. Thank you. Yeah, I'd just like to make one point. On behalf of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, I would like to thank Mr. Mridul Kumar Sarma. Very nice presentation. For any budding entrepreneur, you have given very valuable tips. And very simple, in simple terms, without including much of the jargon and theory and other aspects, but very practical tips. I should congratulate you and thank you for that wonderful presentation. Thank you very much. Thank you so much, madam. Yeah, let me thank you, madam, from Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. Thank you, madam, for joining us. I think. Yes. So before winding up today, we are thankful to our Professor Rajendran from Rajiv Gandhi Institute of Youth Development. So let me say the participant about the tomorrow's program.
Tomorrow we'll start sharply at 10 a.m. and after that there will be valedictory functions after 1 hour deliberation by Mr. Kumar More. Kumar More, perhaps you know, he's a director of Federation of Industries and Commerce of Northeastern regions. So he is very important person. I think he has a lot of experience. He can give you the ideas how you can go for an industrial commercial purpose. And after that, there will be a, I'm going to say, valedictory session will be there from 11 to 12 p.m. So that is valedictory functions. So in the valedictory functions, valedictory address will be given by our as a chief guest, Professor D.K. Soikia, Pro Vice Chancellor of Test Prevency, and also we have two guests of honor. One is Professor Dr. T.R.A. Dev Kumar he is a registrar of Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, and also Madam right now she is online holder day. Dr. Basanti Rajendran, Professor, Center for Training, Orientation and Capacity Building for Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. So this, so I hope everybody will enjoy and all of you will participate. I request Mridul also to participate for tomorrow's valedictory sessions if he has a time for that. Thank you from my side. Yes. Thank you all. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Now we will wind up. Thank you all. Thank you all participants. Thank you for spending your time. Thank you. I think Abhijit can end the meeting. Abhijit. Okay.